In this lecture, we learn about electromotive force. Okay, that is EMF. As the name suggests, it is some kind of force. No, don't confuse with its naming. It's just nomenclature. Okay, it is not actually a force. Okay, then what is EMF? Yeah, you can say it's just historical naming. Okay, earlier time naming. Then what is EMF? So EMF is the potential difference between two electrodes of a cell, okay, when no current flows. That is say, EMF is the potential difference between two electrodes of a cell when no current is flow. Take a cell. Let's suppose I have a cell. Every cell has two terminals, that is positive terminal and a negative terminal. जो भी in terminals, ठीक है, here you can also say terminals, electrodes के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे आप EMF बोल लेंगे. ठीक है, उसे आप EMF बोल लेंगे. एक कंडीशन पे है जब कोई करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, दैट इज I इज इक्वल टू 0, मीन्स ओपन सर्किट. ओके, जब आप कोई भी न्यू बैटरी परचेज करते हैं, ठीक है, आपने कोई भी न्यू बैटरी परचेज करनी है मार्केट में, तो उसके ऊपर वोल्टेज मेंशन होती है. जो एक्चुअली में वोल्टेज लिखी होती है वो EMF होता है किसी सेल का. आई शो यू. सी हियर you can see that 1.5 volt is mentioned on this cell. Okay, 1.5 V for volt. Here 1.5 volts means it is the EMF of a cell. The cell which I show to you is a newly purchased cell, and it is not used in any circuit. You can say in remote of TV. Okay, that means no current is flows through this cell. That is, it is a open circuit. Okay, जब ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो इसके ऊपर आपकी वोल्ट्स में वोल्टेज लिखी हुई है वो एक्चुअल में EMF है. ठीक है, बिकॉज इस टाइम ये यूज में नहीं आ रही है बैटरी, तो हमने डेफिनेशन में वही बोला है कि EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है. तो जब भी आप कोई नई बैटरी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर वोल्ट्स में वोल्टेज लिखी होती है जो EMF कहलाती है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू EMF then you can ask me in comment